Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Students, today we are going to discuss energy and the types of energy and efficiency. But first, we start our topic energy. When we say that a certain body has energy, we mean that it has the ability of exerting force on another body and of doing work on it. जब भी हम बात करते हैं कि अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सके और उस फोर्स के जरिए से कोई वर्क डन करवा सके उस बॉडी के अंदर. On the other hand, whenever we do work on a body, we store in it an amount of energy equal to the work done. Such energy is defined as the capacity of a body to do a work, or energy is an agent which causes some changes in the state of system. यानी कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी बॉडी के वर्क डन की, तो हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी वर्क डन कर रही है तो उस बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है इन टर्म ऑफ वर्क डन. इसी वजह से हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क. एक बॉडी की कैपेसिटी कि वो वर्क कर सकती है, या एनर्जी एक ऐसे एजेंट का नाम है जो कि चेंज ला सके किसी भी बॉडी की स्टेट के अंदर. काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की. दो टाइप्स होती हैं आपके पास. सबसे पहली है आपके पास काइनेटिक एनर्जी. वी ऑब्जर्व डेली that as moving object has the ability to push away another object at rest. Thus, it is the capacity to do work because of its motion. Thus, kinetic energy is defined as energy in a body due to its motion. यानी kinetic energy का फॉर्मूला जो डेफिनेशन होगी वो हो जाएगी kinetic energy एक ऐसी एनर्जी है जो कि बॉडी के अंदर ड्यू टू इट्स मोशन जनरेट होती है या ड्यू टू इट्स मोशन आपके पास नजर आती है. तो इस तरह की एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं. इफ अ बॉडी हैविंग अ मास ऑफ m and velocity v, then the formula for the kinetic energy will be half mv square. Ke is equals to half mv square. Second type of energy is potential energy. In daily life, we see that if we lift a brick from a ground to a top of a roof, work is done against the force of gravity. This appears as a potential energy of the brick. Thus, potential energy is defined as energy in a body due to its position with respect to the surface of earth is called potential energy. यानी कि potential energy क्या है कि किसी भी बॉडी को अगर किसी हाइट के ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है तो उस बॉडी के अंदर एज अ एनर्जी जो वर्क डन स्टोर हो रहा होगा वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा. याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस ऑफ अर्थ. If m is the mass of a body, g is the acceleration due to gravity, and h is the height of that body from the surface of earth, then we can write the equation for the potential energy is P is equals to mgh. Thus, dolphin has lot of kinetic energy as it leaves the water. At its highest point, its energy is mostly potential energy as shown in figure. Now, the next topic is implication of energy losses in practical devices and efficiency. Mechanical efficiency is the ratio of work output to work input. यानी कि mechanical efficiency की अगर हम बात करें तो basically ratio है input work done और output work done के दरमियान. Some are important points given below about efficiency and energy losses. Efficiency और energy losses से related कुछ important points हैं जो नीचे दिए गए हैं. Number 1 है it is often expressed as a percentage. हम इसको percentage के तौर पे express करके लिखते हैं. The efficiency of an ideal machine is 100%. Ideal machine की efficiency हमेशा 100% होगी, but an actual machine efficiency is always be less than 100%. लेकिन actual machine की efficiency less than 100% होगी. और याद रखिएगा हमारे पास जितनी भी machines हैं जो हम इस वर्ल्ड के अंदर यूज कर रहे हैं वो तमाम के तमाम एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर तमाम मशीन्स एक्चुअल मशीन्स ही हैं, वो आपके पास आइडियल मशीन्स नहीं हैं. This means that some of the work put into the system is transferred
ट्रांसफर्ड इनटू थर्मल एनर्जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो लॉस होता है एज अ थर्मल एनर्जी के तौर पर. फ्रिक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनर्जी लॉस टू हीट. फ्रिक्शन सबसे मेन कॉज है एनर्जी को लॉस करने का इन फॉर्म ऑफ हीट. The crane is a machine that is used in our daily life to lift heavy load. The crane uses three simple machines. It has a pulley, lever, and as well as axle and wheel. The next topic is also implication of energy losses in practical devices and efficiency. Suppose using a pulley, if a weight W is raised when an effort force E is applied, so we get output. If a machine moves a load W through a distance h, then the useful work done by the machine is called output. Output बराबर हो जाता है आपके पास load into distance h through which the load moves. Output equals to F out multiplied by D out. Input आपके पास क्या होगा? If an effort F in acts through a distance D input, then the work done on the machine is called input. Input equals to effort multiplied by effort distance, or input we can write F in multiplied by D in. Efficiency, the ratio of output to the input of a machine is called its efficiency, और efficiency का formula हो जाता है output work done divided by input work done. Mathematically, efficiency equals to load force multiplied by load distance divided by effort force multiplied by effort distance. F out multiplied by D out divided by F in multiplied by D in. The equation for percentage efficiency is percentage efficiency is equals to output work divided by input work multiplied by 100%, or we can write this equation W out over W in multiplied by 100%. So percentage efficiency is equals to F out multiplied by D out divided by F in multiplied by D in multiplied by 100%. Even a very efficient device will waste some of its input energy in the form of heat due to friction force between different parts of machine. An incline is used as a simple machine which is a flat surface tilt at an angle theta.